the PowerPoint as well, but sometimes PDF. But today we have uploaded PowerPoint in a different way, so maybe that's the reason my camera is coming differently. It's been this feature in Zoom being there for a long time, and we did test it before as well. But I think because it's already uploaded now, so the way this goes, PowerPoint gets kind of uploaded in Zoom. So, right, okay, I guess we are online. So, Hare Krishna, everyone. And to all those who are here in Zoom and those who are listening to the YouTube live. So, a couple of announcements. The very first one that it's half term next week. So, I will take your permission to go away. I would like to be excused. I'm actually going away for 4 weekends. And out of those 2 weekends, well, 3 weekends actually, we will be without internet. And then by the time I will come back, I will be traveling. So it will be 4 weekends. I'm afraid I won't be able to serve you. So after today's session, which is 19th of October, the next session will be on 23rd of November. So there are 4 weekends in between when I'm either traveling or not available. So my apologies, but because we are doing Fridays and Saturdays, so next online session will be on 22nd of November, which is Friday. And then we do on 23rd as well. Hare Krishna. Please, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, enjoy your break. But Thank you. what I was going to say that I'm going to be away for 2 weeks from 17th of November till 2nd of December. So, hi, terrible. So it will be even longer for us. 6 weeks break for me. Sure. And I'm not going to be there at our sessions. Right. Okay. All right. Thank you for letting us know, Mataji. Yeah. Thank you. Okay, great. Like I know, for example, Anil Prabhuji, he was very regular, but these days for his sons, Jay got chess exams or competition contest going on around the same time, so we catch up later. But I'm glad we are still associated, so that's okay. If in case now and then if you need to, and Prabhuji is here as well. Hare Krishna, Prabhuji. I was just saying, Prabhuji. Hare I hope everything is well. Yes, Prabhuji, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे प्रभु जी, कृपा है प्रभु की। और कार्तिक मास की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दामोदर month. आपको Spiritually, we say this is a discounted month for devotees, that whatever we do, if we chant, we get better benefits. I think it says like 100,000 times we get the benefits of anything spiritual we do. But other way around as well, anything bad we do, that gets multifold as well. So, but I will be traveling, as you would know, there is a half term next week for a couple of weeks actually, and then we will be away for 4 weeks. So that's the first announcement. I will share in the group as well, but I will be back on 22nd, which is a Friday, but then on 23rd for Saturday classes. Another announcement for today's session. So we have completed and concluded month of 15, and we will start month of 16, but because I'm going away for 4 weekends, I thought it's better if we will start month of 16 when I will come back. So I took the opportunity for today's session to be a bit different. It's a few things we have discussed, and one of the questions which I know Mataji has asked a couple of times in the past, and I must admit personally also, I have thought about it. I have personally asked this question, and there's still, even after 20, 30 years of, not me personally, but other devotees, 20, 30 years of Krishna consciousness, they still tend to ask this very basic question. And I thought, let's try to answer that. And the way I will attempt to answer that is through Upanishads. So usually we follow Bhagavatam, other Srimad Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. So that's all Dvaita. Upanishads are more Advaita, even though we are doing Shri Isha Upanishad. So it's a very good transition between Upanishad and Puranas.
because Shri Upanishad is the only one. But there are many other Upanishads, and the way they have explained is about the Lord is through analogies. So today we will see some of the analogies. And the analogies are like mundane examples, which we are very familiar with. Using those, let's try to understand God, how God works. So this is what we will do. But let's do the Mangalacharan, then I will give you what we call usually like a problem statement, like a question which has been outstanding for years, and then how. And I'm pretty sure that we all, we being spiritual seekers, we all have that question, and that's the only question which we would like to be answered. But let's get into that. Before that, we will have Mangalacharan. So Srila Prabhupada ki jai. Let's do the Mangalacharan, and after that we shall kick on. I will clarify what we will discuss today, but I hope it will be very interesting and very different than what we usually do. Oh. अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वयं सदाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथवितं तं सजीवं साधुवैतं सभादूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम। Hare Krishna. So like I was saying, that today it's a very different session, and all the sessions we do, because I'm humbly initiated in the Brahma Madhva Gaudiya Math, ISKCON, Hare Krishna movement. So all the references come from there. But today there is an exemption. So anything I usually say, I can always trace back to Srila Prabhupada's books. But today, whatever I will say, there might be a few things which I will say which I might not able to trace back to Srila Prabhupada's books. So any devotee, Hare Krishna devotee, I will please request you to excuse me. However, it's still coming from our Shastras, it's coming from our Upanishads, and all those references I can provide. So might not be from Srila Prabhupada, but they're still from Upanishads. And there is a bit of difference between Upanishads and our Puranas. Puranas are usually Dvaita. Upanishads are Advaita, mostly, especially superficially the way it appears. Now, just to remind, just to clarify, what is the difference between Dvaita and Advaita? Dvaita, two.
We are different, God is different. And we are servant of God. And the whole purpose of the life is to reach to the God. So three things: where we are servant. And then there is Krishna, we are servant of Krishna. So we are at A, we need to reach to B, Krishna. And then from A to B, there is a route. So that's it. Those three things we need to understand: where we are, where we need to reach, which is Krishna, and how to reach there. That's the whole spirituality summarized. And then there are different marks and different routes given, like Karma Yoga, Dhyana Yoga, Ashtanga Yoga, Jnana Yoga, and then Bhakti Marg, Bhakti Yoga. So that's Dvaita. Dvaita, like we always say in Sanskrit, when we put I at the front, then that the word becomes negate, opposite. So Dvaita becomes Advaita. That means we are not two, we are one. So today we will try to focus on that we are one. This goes against Dvaita, but like what Srila Prabhupada explained, and especially in Shri Isha Upanishad, Om Purnamada Purnamidam Punam Punam Udachyate. Krishna is Purna, we are Purna, and we are part and parcel of Krishna. Krishna is Satchitananda, we are also Satchitananda. We are exactly the same as Krishna in quality, not in quantity. So that's the bit I'm focusing today. So not purely Advaita, but that part of Advaita which Dvaita agrees. So that's why I say this is a gray line between Advaita and Dvaita. So I don't want you to get confused, but forget everything else. Just see these analogies and how Upanishads try to explain through these stories. So these are analogies and metaphors for contemplation. Think about it. Some, they say, before you start reading, some, they say, if out of these, even if one we understand, that's good enough for our liberation. हरे कृष्ण. हिंदी भाषी भक्तों के लिए का भी स्वागत है. आज हम, जैसे हम यूजुअली हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़े जो सेशंस करते हैं भक्ति भाव के, उससे निकल के थोड़ा सा अलग सेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी श्री मंत्र 15 फिनिश हो गया, मंत्र 16 हम 4 वीक्स के ब्रेक के बाद शुरू करेंगे. तो आज का सेशन हम उपनिषदों के वो कुछ एनालॉजीज, कुछ ऐसे उदाहरण के तौर पे जो वो हमें समझाते हैं. और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आता है. उपनिषदों में कहा जाता है कि जैसे अगर किसी पेरेंट को, माने माँ को, अगर अपने बच्चे को चांद दिखाना है, तो वो कहते हैं देखो हो गया चांद. बच्चे को चांद नहीं दिखता, या चांद दिखता है तो चांद के साथ एक तारा है वो नहीं दिखता, तो फिर हम उंगली करके कहते हैं देखो वो गया. तो फिर वो कहते हैं हाँ आपकी उंगली तो दिख रही है. वो कहते हैं हाँ उंगली के साथ में देखो. फिर वहां पे कोई पेड़ होता है, कहते हैं वो पेड़ की वो डाली दिख रही है. कहते हैं हाँ दिख रही है. कहते हैं वो 2 डालियों के बीच में है. तो कहते हैं कि हमारे उपनिषद सभी के सभी वो इशारा करते हैं. वो क्या चीज है जिसकी तरफ इशारा करते हैं? भगवान कृष्ण की अगर हम बात करें, तो चाहे भक्ति भाव से करें, ज्ञान मार्ग से करें, जो एब्सोल्यूट है, जो सत्य है, उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है. इसलिए उसको इशारों के रूप में हमारे उपनिषदों में और पुराणों में भी समझाया गया है. ये एक इंग्लिश में वर्ड आता है एब्स्ट्रैक्ट. ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट रहता है. तो जैसे हम कहते हैं कि मोबाइल का सिग्नल एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाता है. हमको वो सिग्नल अगर पकड़ना है तो हमको मोबाइल चाहिए. मोबाइल नहीं है तो भी सिग्नल है, लेकिन मोबाइल हमें चाहिए. ये एक एग्जाम्पल है. तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं हमारे उपनिषदों के अंदर. स्पेशली अगर हम बात करें कठोपनिषद की, और कठोपनिषद की एक और बहुत अच्छी बात है कि कठोपनिषद के अंदर नचिकेता की कहानी आती है. सो कठोपनिषद इज फेमस फॉर नचिकेता's स्टोरी एंड ऑल्सो फॉर these analogies. So most of these analogies are there. Some of these analogies we have seen it before, but today we will try to go into the detail. And as I was saying, even if one of these analogies we understand, that will be a breakthrough. And when I say breakthrough, and this is not my words, this is what acharyas have said it, and this is what our Upanishads have also said it, that even if one of those we understand, our perspective will change and we will get
exactly the same breakthrough which Gautam Buddha had it, after which he was liberated and he said, I'm awake now. So imagine how powerful that could be. इन उदाहरणों में से कोई भी एक उदाहरण अगर हम समझ लें तो वो हमारी मुक्ति का कारण बन सकता है, और वो मुक्ति हमारी अभी के अभी इसी पल हो सकती है, या फिर ये सारे उदाहरण हम अपने दिमाग में रखेंगे और इनसे जब भी हम अपनी लाइफ के अंदर इंटरेक्ट करेंगे हमको वो हमेशा भगवान की याद आती रहेगी, और फिर वो कभी भी वो पल हमारे साथ में आ सकता है। तो कैसे, हम वो एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहला जो है, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये रीजन है जिसकी वजह से ये एग्जाम्पल बने हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। हम ये बात कर चुके हैं श्री ईशु उपनिषद जब हमने शुरू किया था, पर फिर एक बार हम देखेंगे। उसके बाद हम स्नेक और रॉक का एग्जाम्पल देखेंगे। डेजर्ट के अंदर जो मिराज बनता है, पानी का भ्रम, उसकी बात करेंगे। वाटर के अंदर जो वेव्स होती हैं उसकी बात करेंगे। पॉट क्ले की बात करेंगे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स की बात करेंगे, स्क्रीन मूवी की बात करेंगे। सो थिंक अबाउट इट। हरे कृष्ण, and then with pronouns to those who have just joined. I was just saying, so far we always refer to Srila Prabhupada's books. Today I've taken an example, a lot of examples from Upanishads, so I might not be able to trace back to Srila Prabhupada, so excuse me for that. And also because we are going to take a break for 4 weekends, and I will come back on 5th weekend, and then we will start Shri Ishu Upanishad Mantra 16. So Mantra 15 we finished last week. So today we are going to have a very special class, and these are the analogies from Upanishads. Now all these 6 examples you will see, they all are our mundane examples. We see them on daily basis, some of them, and even if we will understand them, then they will be good enough to remind us the existence of Krishna, and that's the way we should understand spirituality. Right, so let's get started. As always, any question at any time, feel free, unmute yourself, raise your hand, speak up, and we shall discuss. This is only going to be one session, so I will try to go a bit fast, but feel free to interrupt at any time you like. So 4 things which we discussed at the beginning of Shri Ishu Upanishad, that it's hard for us to understand Krishna, and we cannot rely on our senses because the senses are imperfect, right? Very first thing, senses are imperfect. I cannot see without my glasses. Some got the device in ears. Even if we don't have any devices, we still get confused. And if we can see, we can only see so far. If we can hear, we can only hear so far. Sometimes we get confused. Sometimes, for example, jaundice. Sometimes people have those medical conditions because of these senses. They don't work. So we cannot rely on these senses because these senses are imperfect. Because of these imperfect senses, we get illusioned, and that's the most important bit. We get illusioned. Now, this illusion needs to go away. The whole concept of being in material world is that we are ignorant, we are illusioned. And then because we are illusioned, we make mistakes. If we are illusioned, we make mistakes, and we will see how. And then sometimes what we do, if we are not honest, when we make mistakes, we try to hide it, and then we start cheating others, which means we will lie. We will try to hide. So these are the 4 steps which we usually go. We will always have imperfect senses, and we will always get illusions, and we will always commit mistakes. So these 3 things will always happen as long as we have this material body. With some, it will happen more than others. With age, it will be more or less, but these 3 things will always happen with us and with others who live around with us. So we should be always careful. The 4th thing is optional. We don't need to cheat others. We don't need to hide. We can raise our hands. My bad, I did wrong. And then that's the way we can improve. Right. तो हमने 4 चीजों की बात करी। सबसे पहले, क्योंकि जो हमारे इंद्रियां हैं वो सही नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है, इसकी वजह से हम सेकंड चीजें हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारी चीजों में। कभी हमें किसी की आवाज किसी और की आवाज लगती है, और कभी हम कुछ टेस्ट करते हैं, उसका स्वाद हमें कुछ और लगता है, और इसकी वजह से हम गलतियां कर देते हैं। क्योंकि हम गलतियां करते हैं, फिर गलतियों को छुपाने के लिए हम झूठ बोलते हैं। तो ये 4 चीजें होती हैं। शुरू की जो 3 चीजें वो हमेशा होंगी जब तक ये मटेरियल बॉडी, भौतिक संसार के अंदर हम हैं। पहला कि
इम्परफेक्ट सेंसेस हमारी होंगी, इंद्रियां हमारी कभी भी पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकती, और जैसे जैसे एज बढ़ेंगी हमारी इंद्रियां और खराब ही होंगी, और हम और ज्यादा इल्यूजन होंगे। हम जितने अच्छे से काम पहले कर सकते थे अब नहीं कर सकते, चाकू से हम सब्जी जितनी अच्छी काट सकते थे अब नहीं काट सकते, जितने अच्छे हम क्रिकेट पहले खेल सकते थे अब नहीं खेल सकते। तीसरी चीज, क्योंकि अब हमारी हम अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम गलतियां करेंगे। ये तीन चीजें हमेशा होंगी। चौथा हमारे पास में ऑप्शन है कि हम उसको छुपाएं या हम उसको एक्सेप्ट करें। द होल प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस स्टार्ट्स विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी raise our hand. Chapter 2 verse 7, karpanya dosho upahata sabhava. Arjun said to Krishna that that's it, I'm bewildered, and he surrendered to Krishna. So the fourth step is to surrender to Krishna rather than to cover up or try to pretend that nothing happened. So remember that. Now illusion. Now before we go there, illusion. Thanks to Mataji. Then with pranams to you, Mataji, again, that you've been with us and you have asked so many great questions. One of those questions which comes up again and again, and that's the basis of today's presentation session, that we are a spiritual soul, and the material body is there. What is the connection between these two? If spirit soul is always Satyachit Anand, how something which is Satyachit Anand gets covered by or gets bewildered by the material body or material mode of nature? Satya, Guna, Rajguna, and Tamoguna, goodness, passion, and ignorance. How does that happen? What is the relation between these two? Where exactly that happens? And if you remember, I always said, and because this our Shastras always said, that actually our spirit soul doesn't get bewildered. And there is no connection between these two. It's like sun is there and we are in the sunlight and the cloud comes in between. Because the cloud comes in between, we cannot see sunshine. But what is the connection between us and cloud? Nothing. Cloud is high above. There is no physical connection at all. We are just under ignorance. That's it. We are just under illusion. That's it. Now that ignorance should go, illusion should go. Hence, the very first mantra in the Mangla Charan is Om Ajnana Timrandhasya Jnana Shalaka. Our Guru has given us the Shastras, Chakshus, and our ignorance has gone. That's the only thing it's gone. It's required. तो हम सिर्फ अंधकार में हैं और हमको इस अज्ञान से बाहर आना है, बस इतनी सी बात है। और ये अभी के अभी हो सकता है। जितनी भी एनालॉजीज हम आज डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, इसमें से कोई भी एक अगर हमें समझ में आ जाए और हम उसको अपनी लाइफ में अपना पाए तो ये काम हो सकता है। इसकी गारंटी हमारे शास्त्र देते हैं। सबसे पहला, अगर हम स्क्रीन पे पूछें कि ये रस्सी है कि सांप है, कोई बताना चाहेगा, चैट में शेयर करना चाहेगा, ये रस्सी है या ये सांप है? Is it a snake or is it a rope? I know I have two pictures there. You can say left or right. We can just say both. Prabhu ji. यहाँ पे है ना individual perspective. If somebody is closely watching or from like far distance from the left hand side, you can still say the snake. On the right hand side, you can basically that's also same because you are not watching from the close enough distance. But when you go towards more distance and you can watch carefully, then you can distinguish difference because definitely from the right hand side, you can't say like it's a snake or even that's another kind of rope. It is like a nylon rope or something, but you have to go physically and nearby distance and you can see. Great. Hare Krishna. Thank you so much, प्रभु जी. आपने बिल्कुल सही कहा और वैभव प्रभु जी ने भी कहा कि रस्सी. तो अब आप ये देखें कि हम एक रूम के अंदर एंटर हुए और लाइट थोड़ी सी है, थोड़ी सी नहीं है, और दूर हमें एक रस्सी पड़ी हुई दिख रही है जो ऐसी लग रही है कि सांप है. अब हमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो वो रस्सी के पास में जाकर ये चेक करेंगे कि ये रस्सी है कि सांप है?
I think No, wouldn't go near. true. Hare Krishna, Mataji. Thank you so much. Yes, I wouldn't go either. I wouldn't let my kids go to check it. I would say just presume this is a snake, right? Just presume this is a snake and take distance from it. Now, from Upanishads, that is the difference. That it has always been a rope, but we presume it as a snake, which means this life, this material life we are living at the moment, it's actually an illusion, but we consider that a reality. This material body, even though we know it's going to go down one day, but the way we live our life is that we're going to live for very, 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 very long time. And maybe probably we will never go. We all know that we're going to die one day, but most of the time we don't want to speak about death. And then definitely we are not ready about death. And if somebody dies, we always cry. But the whole life, we knew the person, either the person will die or we will die. So what do we need to do? What do we need to do? We just need to, if you are in that room where we see whether it's a snake or a rope and we are not sure, what do we need to do? The only thing we need to do is to switch on the light, which means, again, the darkness of our ignorance will go away and the knowledge about the reality will be there. If that reality is there, that means we can see as it is. Hence, Prabhupada said, Bhagavad Gita as it is, right? We can see if it's a snake or it's a rope. Now, let's imagine this is a rope. If this is a rope, somebody will say, oh, what happened to the snake? What happened to the snake? It wasn't the snake to start with anyways. Somebody said, no, you don't need to get afraid from it because the snake is gone. So this is when somebody will say that, oh, this material world doesn't affect those who are enlightened. This material world doesn't affect those who are enlightened, which meant somebody might say that, oh, if the light is on, this snake will not bite. But that's not true. To start with, the snake wasn't there, which means this material world was actually not strong enough to bind us. But the only reason we felt that we are attracted towards all that is because the light was switched off. And that light is the Gyan we get from Shastras, the Gyan which Srila Prabhupada has put in the Shastras, what the Upanishads try to explain to us. So all along, it's a snake, as long as we are in the darkness. If we have the light, we will see whether it's a snake or it's rope. If it's a snake, we know it, we will keep a distance. Or if it's a rope, which Upanishads say that this material world is as, and hence we call it matter. We call it dead matter. Matter is dead, like a snake, like a rope. Rope is a dead matter. This will never affect us. Only that rope can affect us when we will presume that that rope is not rope, it's a snake. So these relations will only bind us when we are in darkness and we will feel attached to them. They have never attached to us. We are never attached to them, ever. So this is the difference, that how spirit, soul, and the body are connected. They are actually never connected. This rope was never a snake. It's just the ignorance. However, the question could be that whose ignorance, right? That ignorance is actually in the subtle body, and subtle body is in between. Subtle body is material, but that's also, that has a bit of impact on the soul. No, well, not really, but it's apparent. But we will see. We will see the second example. But always remember that it's not, the power is not in that rope. Hence we say we are self-realized. Hence Buddha said, I'm awake. The power is not in the rope.
It's only the confusion we have, thinking that that rope is a snake. Mataji, please. Yes, just a thought, Prabhuji, that yes, we can see that rope is okay, but if a snake is there, because the rope is dead and the snake is alive, when the snake moves or makes a movement, then we are able to make it out without there being too much light there. Yes, you're right, Mataji. If it's a snake, we should definitely be careful, and then we will act accordingly. Over Shastra, because Shastra is comparing this analogy with the material world. And in material world, we have material matter, like this body. We think this body, for example, is moving, but this body is only moving, or the car is only moving as long as the driver is in there. So the body is still dead body. So this, in our example, this will always be rope. It will never be snake. That rope is only appearing as a snake. So you're right. If it's a snake, it's a different story. But Yes. in our example, this material body is actually that rope which is dead, but appearing as a snake to us. Okay, so we have to consider things as a rope rather than as a snake. Yes, yes. That the material life is a rope, it's a dead rope, just because of our ignorance, because the light is switched off, because we are not connected to Krishna, we are not connected to the Shastras, we don't have that knowledge and wisdom. Hence, we think that this material rope is appearing as a snake, and it will come and it will affect us. Understood. Yeah. Thank you, And we Prabhuji. will, Hare Krishna. We will see more examples, but with that, if you always remember that it could be, doesn't really matter, like what Prabhuji said, that depends. If you go closer, we can see it, but doesn't really matter how close we go to this material world. This if it's a rope, right? This rope doesn't really matter how resemble it is to the snake. It will never ever. The rope could appear as a snake, and a lot of time the chefs, they do it. They prepare some dishes, like we were watching, and there was a water bottle, like a bottle, and then it feels like it's a real bottle. But take the knife and cut it. Well, I think kids, they watch it. Cake, or is it a cake? I think there is something kids watch. Is it a cake? And the things they make, it appears, and it's hard to say. The whole show is based on that. They will show three things, and you need to find out which one is cake. And they all look very similar. So what we're saying here, it doesn't really matter how real it looks like, how real this life looks like. It is dead matter. It is dead matter. And that's what the enlightened beings, they understand. After that, not that that rope is gone away, not that these people, these enlightened beings, they're away or transcendent. They have just realized that this is rope. This is not a snake. Hence, nothing in the world can affect them. Nothing. Doesn't really matter how realistic that rope will look like. And then, what if that snake, which is fear, was just a rope, which is nothing, which is nothing? What if this will happen? What if that will happen? Doesn't really matter what happens. If the snake is actually rope, doesn't really matter what happens. This rope could never, ever able to do any harm to us. But we can spend our whole life in this fear that at the corner of that room, that rope is a snake. And we can do it. We can let our kids, the same fear we pass on. Oh, better you take care of these things in the world. These things will affect. If you're not educated, if you won't go to the university, these things can affect you. You got to be very careful. But the only thing is, we need to give them the wisdom that they are awake. Now they can see this matter can never affect us. That's the very first thing. Now let's look for the second example. Is the example of mirage. And Swami Vivekananda ji gave this example number of times, because he was traveling, and especially in America, where there were some deserts as well. So in the desert, if you ever been, you will see far distance, you will see the water. And this is very famously known as mirage.
हम रेगिस्तान के बीच में पानी का जो आभास होता है, एक अपीयरेंस जो आती है कि वो पानी है, वो पानी नहीं है। हमें लगता है पानी है, जैसे प्रभु जी ने कहा हम पास जाते हैं तो हमें पता लगता है वो पानी नहीं है। वो तो सिर्फ हम उसके पीछे अगर समझने की कोशिश करें तो हम उसके पीछे की साइंस भी समझ सकते हैं, राइट, कि किस तरीके से जो रोशनी आ रही है, और क्योंकि टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस है रेगिस्तान के अंदर, हमको वो पानी दिखता है जो पानी एक्चुअली हवा के अंदर होता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपीयर होता है क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट्स बहुत होते हैं। बट again when we will go away from that place and turn back and look, it will again look like water. Yeah, it will again look like water. That mirage will always be there, which means so, किसी ने पूछा जो मुक्त हो जाते हैं लोग फिर क्या वो खाना नहीं खाते हैं? नहीं, खाना खाते हैं, बॉडी का उन्हें ध्यान रखना होता है। क्या वो लोगों को अलग तरीके से बिहेव करते हैं? नहीं, वो नॉर्मल, बहुत सारे ऐसे नॉर्मल और कितने सारे हमारे शास्त्रों में एग्जाम्पल हैं जो कि वो सभी के साथ में रहते हैं, राइट, सभी की तरह। लेकिन उनको अब रियलिटी पता लग गई है कि वो जो मिराज दिख रहा है वो पानी नहीं है, वो सिर्फ एक आभास है। ये जो रिश्ते हमें दिख रहे हैं वो सारे रिश्ते निभाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये रिश्ते सारे के सारे खोखले हैं, बेस्ड ऑन सम कॉमन इंटरेस्ट, दैट्स इट। You go along, live with all your relatives, do all your duties, but at the end of the day you will remember we are just together. There is another one I haven't included in the presentation, but it's there in the Bhagavatam. Srila Prabhupada says that like straws, हम पानी पीते हैं तो हम स्ट्रॉ यूज करते हैं पानी पीने के लिए। जैसे एक वेव आई और वेव ने बहुत सारे स्ट्रॉ को साथ रखा और कुछ टाइम तक वो स्ट्रॉ इकट्ठे रहेंगे, दूसरी वेव आएगी वो स्ट्रॉस को अलग अलग कर देंगे। इसी तरीके से कुछ पुराने कर्मों की वजह से हम कुछ लोग एक परिवार में पैदा हुए, एक परिवार में जुड़े, कुछ समय इकट्ठे रहेंगे, दूसरी वेव आएगी, दूसरा जन्म होगा, हम अलग हो जाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात। ये कैंटो 7 चैप्टर 1 और 2 के अंदर ये एनालॉजी प्रभुपाद जी ने दी है। तो ये हमें कैसे पता रहता है? हमें वो दिख रहा है, अभी भी हमको इल्यूजन दिख रहा है कि वहां पे मिराज है, पर हमें अब ये भी पता है कि वो पानी है। वो जो हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती हैं वो हमें अब और धोखा नहीं देंगी, वो अपीयर होगा हमको। जैसे कि हमको आसमान हमेशा नीला दिखेगा, समुद्र का पानी हमें नीला दिखेगा, लेकिन हम जितना पास जाएंगे हमें पता लगेगा वो नीला है नहीं, इट ओनली अपीयर्स। जैसे हम देखते हैं कि आसमान, कहते हैं सनराइज और सनसेट बहुत खूबसूरत होते हैं, क्या आसमान का कलर होता है, लेकिन आसमान का ऐसा कोई कलर नहीं होता। आसमान का जो स्पेस है वो सेम कलर का रहता है। सूरज की रोशनी और जहां पर पानी है वो दोनों मिलकर जो हमें अपीयरेंस बनती है, उसकी वजह से अपीयर ऐसा होता है, कलर्स अपीयर होते हैं हमें आंखों में, right? अगर हम ये चीज समझ पाए, हमें ये चीज पता लगे कि ये जो अपीयरेंस है, हम कहते हैं नेम फॉर्म एंड शेप, ये अपीयरेंस से ऊपर उठ के हम भगवान को देख पाएंगे, हम सोर्स को देख पाएंगे। हम ये समझ पाएंगे कि ये जितनी भी चीजें हैं वो अपीयरेंस है। अगर हम भगवान की बात अगर ना भी करें, क्योंकि जैसे शुरू में कहा हम उपनिषद की बात कर रहे हैं, उपनिषद बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स में बात करते हैं। उपनिषद सिर्फ इस चीज की बात कर रहे हैं जितनी भी चीजें अपीयर हो रही हैं ये अपीयर होना नहीं छोड़ेंगी, छूटेंगी। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा वो पानी का मिराज अभी भी दिखता है, लेकिन अब मुझको ये मालूम है कि वो पानी नहीं है, वो सिर्फ एक मेरे आंखों का भ्रम है। वो अभी भी मुझे भ्रम दिख रहा है, पर मुझे मालूम है कि वो भ्रम है। सिर्फ वो पता होना हमें, वो रिश्ते हम फिर भी निभाएंगे, काम हम फिर भी करेंगे, जॉब पर जाएंगे, टेम्पल में जाएंगे, मॉस्क में जाएंगे, लेकिन फिर भी हम ये ध्यान रखेंगे कि क्या है, सच क्या है और अपीयरेंस क्या है। अब ये दो एग्जाम्पल हमने देखे, रोप और स्नेक का और मिराज का। अब हम उसके आगे अगर जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक एग्जाम्पल ये दिया है, और ये काफी पॉट एंड क्ले का एग्जाम्पल आता है। यहाँ हम भगवान से किस तरीके से सत्यचित आनंद के रूप में है, भगवान से किस तरीके से बने हैं, अलग भी हैं और सेम भी हैं। जो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा अचिंत्य भेद अभेद,
कि एट द सेम टाइम कैसे हम डिफरेंट हैं और सेम हैं, ये समझना भी बहुत मुश्किल होता है. सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड a potter who use the clay to build a pot. Now if we see this pot and we say this is a nice pot, and somebody might come and say, well, this is clay, who is right? Well, both are right. This is a pot, but this is also a clay. But somebody can say, well, you can break this pot, the clay will always be there, right? You break this pot, clay will always be there, and then again you can make another pot out of it. So अगर हम देखें कि एक कुम्हार मिट्टी को लेके अलग अलग बर्तन बनते हैं, अलग अलग शेप के बर्तन बनते हैं, लेकिन जो एसेंस में वो हमेशा मिट्टी रहती है. जब वो शेप नहीं बनी थी तब भी मिट्टी थी, अगर वो बर्तन टूट जाता है वो तब भी मिट्टी है. इसी तरीके से हम जो सत्यचित आनंद, हमारे अंदर जो स्पिरिट सोल है भगवान की, भगवान का जो अंश है, वो हमने ये जीवन लिया उससे पहले भी थी, ये शरीर जाने के बाद भी वो चीज रहेगी, और वही चीज है जो हमेशा रहती है. अगर नेम, हमारा कोई नाम नहीं है, फॉर्म, शेप, अगर हमने अलग अलग फॉर्म एंड शेप्स नहीं ली है, हमने, हमारा कोई नाम अभी तक किसी ने नहीं रखा है, तो भी जैसे कोई मिट्टी है, कोई मिट्टी से आके पूछ सकता है आप क्या बनाएंगे, कहते अभी तक सोचा नहीं है. क्या बनाएंगे सोचा नहीं है, यानी जो बनाएंगे उसका अभी कोई नाम नहीं है, उसकी कोई शेप नहीं है, लेकिन वो मिट्टी अभी भी है. वो मिट्टी भगवान, वो मिट्टी भगवान का अंश, वो हमारी आत्मा जो हमेशा है, इस जीवन से पहले भी थी, इस जीवन के बाद भी होगी. वो चीज जिसके बारे में भगवान कहते हैं भगवद गीता चैप्टर 2 के अंदर कि अर्जुन किस चीज के लिए घबरा रहे हो, ये लोग ना कभी थे ना कभी होंगे, और तुम ना कभी मर सकते हो ना कभी मरे थे. राइट? कि भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं, भगवान उस मिट्टी की बात कर रहे हैं, नेम फॉर्म शेप की बात नहीं कर रहे. नेम फॉर्म शेप आती जाती रहेंगी, वो मिट्टी हमेशा रहेगी, वो मिट्टी ही रियलिटी है. बाकी जो चीज है वो एक तरीके से अपीयरेंस है. जैसे हमने देखा कि पानी हमें दिखा, वो फॉर्म है, टेम्परेरी है. यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट आता है कि अद्वैत कहेंगे कि वो है ही नहीं, इल्यूजन है, और प्रभुपाद जी कहते हैं इल्यूजन क्या है, ये सामने दिख तो रहा है. अब ये दोनों चीजें एक समय पे सही हो सकती हैं, कि वो इल्यूजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो है बहुत टेम्परेरी, कि ये पानी, मिट्टी, मिट्टी हमेशा से रही है, मिट्टी हमेशा से रहेगी. लेकिन ये पॉट, जैसे हम अभी गणेश जी का विसर्जन हुआ, गणेश जी आए 9 दिन के लिए, किसी ने अपने साथ में रखे, और उसके बाद में फिर बाद में मिट्टी में, उससे पहले भी मिट्टी में थे. अब कोई कह रहे तो मिट्टी ही है, तो कहने का तरीका है अरे ये तो मिट्टी ही है. एक तरीके से देखा जाए तो बात भी सही है, लेकिन फिर कोई ये भी कह सकता है कैसे मिट्टी है, कैसे मिट्टी है. एक और एग्जाम्पल आता है, उस एग्जाम्पल के अंदर, और हम अभी हम देखेंगे, हम एक सुनार की बात करेंगे, गोल्ड की बात करेंगे, तब हम उसको डिस्कस करते हैं. लेकिन अगर हम इसमें देखें कि ये मिट्टी है, और ये हमारे पास में मिट्टी से शेप बन रही है, तो मिट्टी से हम कोई भी शेप बना सकते हैं. मिट्टी वो सत्य है जो हमेशा रहेगा. पर दिक्कत ये होती है, अब यहां हम देखें, मिट्टी अगर सोल है, और इस मिट्टी से जो हमने शेप लिया है वो बॉडी, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो इनलाइटन है वो ये देख सकते हैं, वो जब भी किसी भी, वो पीछे अगर हम देखें, ये किसी भी शेप को देखेंगे तो वो मिट्टी देख सकते हैं कि ये सब मिट्टी से है. इसलिए उनको हर इंसान के अंदर भगवान दिखेगा, तो हर मिट्टी की बनी हुई चीज के अंदर उनको मिट्टी दिखेगी. लेकिन लेकिन जो हम इनलाइटन नहीं है, हमें वो मिट्टी पे इतना भरोसा नहीं होगा. हमें नहीं मालूम कि वाकई मिट्टी, आप देखें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कच्ची मिट्टी है, अरे नहीं नहीं ये पक्की मिट्टी है, अरे ये मिट्टी में कुछ मिलावट है, अरे नहीं ये मिट्टी के, जैसे हम मिट्टी का बर्तन घर में रखते हैं तो कई बार लोग ये कहते हैं अरे तो मिट्टी को कैसे चढ़ा देते हो गैस के ऊपर, मिट्टी को, मिट्टी में कैसे खाना बन सकता है. तो वो जब आप यूज करते हैं तब आपको पता लगता है कि कैसे कच्ची और पक्की मिट्टी में फर्क है. लेकिन जो एनलाइटन बीइंग है वो अवेक है, क्योंकि वो, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, चाहे चाइनीज डिवोटी हो, रशियन डिवोटी हो, अमेरिकन डिवोटी, इंडियन डिवोटी, वो उनके पीछे की आत्मा जो है, भगवान का जो अंश है, वो मिट्टी को देख सकते हैं,
वो ये नहीं देखते कि नेम, फॉर्म, शेप, साइज क्या है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये मिट्टी है और मिट्टी मेरे प्रभु है। तो ये जितनी भी फॉर्म्स हैं ये हमें दिखती है और हम वो शेप से अटैच हो जाते हैं, लेकिन हमको समझना मिट्टी को है। अगर हम मिट्टी को समझ पाएंगे तो हम कभी भी फियरफुल नहीं होंगे, क्योंकि हमें मालूम है मिट्टी हमेशा रहेगी। हमें वही कि अगर हम ये समझ पाए कि स्नेक तो था ही नहीं, स्नेक तो अपीयर हुआ, टेम्परेरी रूप से अपीयर हुआ। आपको ये भी कहते हैं साइकोलॉजिकल लोग कई बार ऐसी बातें करते हैं कि अगर आपने 10 मिनट के लिए उस रस्सी को सांप समझा तो इसका मतलब वो सांप था। वो 10 मिनट के लिए आपके लिए सांप ही था। अब कोई कह सकता है कि नहीं, पर वो तो था ही नहीं कभी। लेकिन कोई ये भी कह सकता है वेल मेरे लिए तो था भाई। तो सिर्फ ये कहने, किस तरीके से वर्ड्स को हम कहते हैं उसका क्या मतलब है। और हम हमेशा ये समझें वो भगवान जो है मिट्टी है, हम जो वो आत्मा है वो मिट्टी है, वो पहले भी थी, वो बाद में भी रहेगी, वो हमेशा रहेगी। इसलिए डरने की कोई भी कभी जरूरत नहीं है। कभी भी किसी शेप को देखें, किसी इंसान को देखें, किसी जानवर को देखें, उसके पीछे भगवान का जो अस्तित्व है आप उसको समझ सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे आता है, वो सिमिलर एग्जाम्पल्स है लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखें, एक फादर ने जो ज्वेलर है उन्होंने अपने बच्चे को कहा तिजोरी में जाके आप देखें, जस्ट गो टू द vault and take the gold out. And the son went there, opened the vault, came back. There is no gold. Father said, "What? I put so much gold there." He went there, and he said, "Well, what are you saying? No gold? There are all these items." And he said, "Yeah." बच्चे ने कहा कि हाँ, इसमें मैंने देखा कि इसके अंदर गोल्ड की कानों की है, गोल्ड का टीका है, गोल्ड का हार है, पर गोल्ड कहाँ है? तो फादर ने कहा ये सारी चीजें गोल्ड की ही बनी है ना। तो सिर्फ इतना सा फर्क है कि जब हम ये सारी चीजों को देखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये गोल्ड है। हम उसकी नेम, फॉर्म एंड शेप के ऊपर हम उससे अटैच हो जाते हैं, राइट। हम ये भूल जाते हैं कि सभी बच्चे भगवान के हैं, लेकिन हम अपने बच्चों से, क्योंकि वो मेरे हैं, हम अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर से, अपनी जॉब से, अपने पैसों से जो अटैच हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने और दूसरे के अंदर नेम, फॉर्म एंड शेप से अटैच हो जाते हैं। Beyond it, if we could realize that gold, which is the spirit soul, has always been there. It was there before we made these ornaments. And it will be there even when these ornaments will go back in the gold. The top reality is only gold. गोल्ड ही रियलिटी है, बाकी जो है वो सब टेम्परेरी अपीयरेंस है। अगर हम ये चीज समझ पाए, अंधकार है कि हम वो अपीयरेंस को ही रियलिटी मान लेते हैं। वो अपीयरेंस टेम्परेरी है, उसकी रियलिटी गोल्ड है। जब वो ऑर्नामेंट्स नहीं भी थे उस शेप फॉर्म में तब भी वो गोल्ड था, अब भी गोल्ड है, और वो खत्म हो जाएगा तब भी गोल्ड होगा। हमारे अंदर सत्यचित आनंद हमारे ये शरीर लेने से पहले भी भगवान का अस्तित्व था, अब भी है और बाद में भी होगा। दिक्कत सिर्फ ये है कि हम वो बच्चे की तरह हम वो ऑर्नामेंट्स की शेप साइज से इतने, उसका नाम है कुछ, हम कहेंगे वो पजेब है, हम कहेंगे वो सेट है, वो कान का है, नाक का है, टीका है। हम वो शेप्स के अंदर इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि आफ्टर ऑल ये गोल्ड ही है। और इसलिए साधु संत एक गांव से दूसरे गांव में जाके आराम से कैसे बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है वो भी गांव भगवान का था, ये भी गांव भगवान का है, ये भी लोग भगवान के हैं, वो भी लोग भगवान के हैं। इसलिए उनको किसी से अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि वो ऑर्नामेंट्स के पीछे के भगवान को, गोल्ड को देख पाते हैं। वेव्स की हमने बात करी, एक और एग्जाम्पल आता है कि हम देखते हैं ये वेव है, लेकिन अगर हम देखें तो जब तक वो पानी, अगर पानी शांत था, वेव नहीं बनी थी, तब भी वो पानी था। जब वेव बन गई तब भी पानी है, जब वेव वापस शांत हो जाएंगी तब भी वो पानी है। नेम, फॉर्म एंड शेप, ये टेम्परेरी जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड बना है, टेम्परेरी टेम्परेरी है। हो सकता है 100 साल जी जाए, लेकिन टेम्परेरी है।
क्षण भंगुर, हमारे हिसाब से वो क्षण थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ब्रह्मा जी के हिसाब से वो क्षण इतना छोटा है कि आंख पलक झपकी ब्रह्मा जी ने और एक ब्रह्मांड चेंज हो गया। ब्रह्मांड नहीं, सॉरी, हमारा हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो चेंज हो गया। तो अगर हम इस चीज को समझे तो हम समझ सकते हैं कि नेम फॉर्म एंड शेप, ये आई थिंक लास्ट एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें और समझ पाए, और मे बी ये एग्जाम्पल हमारे लिए शायद सबसे ज्यादा रेलिवेंट हो। इस एग्जाम्पल के अंदर अगर हम एक स्टोरी के रूप में समझें, देयर इज अ चाइल्ड, सो द फादर सेड ओके आई विल टेक यू टू द सिनेमा, and there will be a screen there. On the screen we will sit on the seat, right there the screen will be right at the front of us, and we will see all the movie characters will come, we will watch movie. And the daughter said, oh dad, very exciting, let's go. And this is the screen the father was saying about. So पिता ने पहले अपनी बच्ची को कहा हम मूवी देखने चलते हैं बेटा, मैं आपको मूवी दिखाऊंगा, वहां पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन होगी। बच्चा कभी पहले गया नहीं था, बच्चे ने कहा अच्छा स्क्रीन होगी, स्क्रीन पे जाके मूवी देखेंगे, बहुत अच्छा है, इसको चलो सिनेमा चलेंगे। तो बच्चे ने, फादर ने इस स्क्रीन की बात अपने बच्चे को करी थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो आने में थोड़ा सा लेट हो गए। जब तक वो सिनेमा में पहुंचे मूवी शुरू हो चुकी थी। जब मूवी शुरू हुई तो मूवी शुरू होते ही बच्चे ने देखा वाओ फ्रोजन एंड दीज आर द फेवरेट कैरेक्टर्स, एंड द चाइल्ड गॉट एनग्रोस्ड। थोड़ी देर के अंदर बच्चे ने कहा डैड हैंग ऑन, यू सेड देयर विल बी अ स्क्रीन। बच्चे ने अपने पिता से पूछा आपने कहा था कि स्क्रीन होगी, स्क्रीन कहाँ है? अब फादर कह रहे हैं बेटा ये जो मूवी है ना ये स्क्रीन पर ही हो रही है। तो उन्होंने कहा मूवी तो दिख रही है पर स्क्रीन कहाँ है? तो फादर ने पॉइंट किया, तो कहा ये Elsa. Is it Elsa? Sorry, I forgot the names of the characters. My daughter will never forgive me. But Elsa, for example, she's the one. No, 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 no. She's the character. The screen is behind. So what behind? Oh, there is a reindeer. Is this? No, 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 no. Behind. No, behind is the snow. No, no, no. Behind is the sky. And the father cannot. How? क्या फादर झूठ बोल रहे हैं? नहीं, फादर जो कर रहे हैं इशारा कर रहे हैं, कैसे स्क्रीन को समझाएं जब मूवी चल रही है। इसी तरीके से जो हमारे साधु संत होते हैं वो भगवान को समझाने की कोशिश करते हैं कि हर चीज के पीछे भगवान है। लेकिन क्योंकि हम मूवी कैरेक्टर्स के अंदर इतने बिजी होते हैं, वी आर सो engrossed in the movie, and obviously we don't remember because we came in this life a bit later. By the time we got up, our parents, they started showing the movie and they were enjoying the movie, they started us enjoying the movie, and we got distracted, and the only thing we could see the movie, we can't see the screen. Now think of it, the screen was there even before movie started, and the screen will be there even after the movie will finish. जब मूवी नहीं चल रही थी तब भी स्क्रीन थी, और मूवी खत्म होने के बाद भी स्क्रीन होगी। जब मूवी चल रही है तब भी स्क्रीन है, पहले भी थी, ड्यूरिंग भी है, आफ्टर भी है। सेम चीज गोल्ड, सेम चीज वाटर और वेव्स का एग्जाम्पल, सेम चीज जो रोप थी वो स्नेक की तरह अपियर हुआ, लेकिन वो पहले भी रोप थी। जब हमें अपियर हो रहा था स्नेक तब भी रोप थी, और जब हमें सही दिखेगा तब भी रोप है। तो सत्य जो है वो रोप है, वो पानी है, वो गोल्ड है, वो स्क्रीन है। ये सारी नेम फॉर्म एंड शेप अपियरेंस है, एंड these appearance change for different people. There are so many different appearance. कभी हम अच्छी appearance में होते हैं, we start laughing and we enjoy ourselves, we are having the blast. Sometimes the movie is very sad, somebody got COVID, somebody lost a job, somebody lost a family member, we get depressed, even though the movie is never affected. Satyachit Anand, the soul is the movie, the soul is the gold, the soul is the wave, soul is the water, soul is the snake, rest of them are, sorry, soul is the rope, the rest of the things are appearance. The snake is the appearance, the wave is the appearance, the ornaments are the appearance. The movie is appearing, the movie is appearing on top of the screen, and the screen is the basis. If the rope was not there, there couldn't have been any appearance of the snake, right? तो आत्मा है तो शरीर है, पर शरीर नहीं भी है तो भी आत्मा है। शरीर के पीछे हमेशा आत्मा रही और वही सच है। तो alright, okay, I know it's just to say, now you might say what is the solution, and the solution is this. Solution is, so all that
was an analogy. This is also an analogy, but this is a solution. Solution is we watch the movie and realize this is a movie. Always enjoy the movie as much as you could, but always remember this is an appearance. It will go away one day. Like you're waiting at the station, the train will come, train will go. Never get on to that train. वो मूवी से अटैच ना हो आप, हमें उस मूवी से अटैच नहीं होना होता। जैसे हम बैठे हैं, विचार आएंगे और विचार जाएंगे, उन विचारों से, थॉट से हमें अटैच नहीं होना है। हम जो विचार आता है उससे ओवरलोडेड हो जाते हैं, और हम ही नहीं ओवरलोड होते, हम अपने बच्चों को भी कहते हैं ओवरलोड हो जाओ उन सारी चीजें, मल्टीटास्क करो। हम एक एक करके उन विचारों से जुड़ने लग जाते हैं, अटैच होने लग जाते हैं। हालांकि सॉल्यूशन ये है कि सिर्फ हमको बैठ के देखना है, वो विचार आएगा और विचार चला जाएगा। अगेन, get involved if you want to get involved, but always remember this will come and this will go. This is just an appearance. The others will welcome us. Why? Because they are bewildered themselves. जो खुद सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हैं वो हमको भी कहेंगे इंद्रियों के भोग में लगो, क्योंकि उनको खुद को सत्य नहीं मालूम। वो ट्रेन में चढ़ चुके हैं और उन्हें नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं, वो आपको भी कहेंगे आप आओ। अल्कोहल के लिए सोचें, आप नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए सोचें, माला छोड़ें, हमारे साथ क्रिकेट वॉच करें। दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि कोई क्रिकेट आ रहा है। अभी कुछ फ्रेंड्स कहीं बाहर गए हैं, उन्होंने मेरे को कहा आप साथ में चलो, तो मैंने कहा सेशन है। उन्होंने कहा कभी सेशन छोड़ दिया करें, आप हमारे साथ घूमने ही चला करें। बिकॉज दे हैव बोर्डेड द ट्रेन and they would like you to board as well. We don't really need to, we just need to be. The train will come and go, these experiences will come and go. Worst scenario, and हम यहाँ अंत करेंगे, हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि हम ये मानते ही नहीं है कि स्ट्रेस के बिना भी जिंदगी हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो। ये सिखाते ही नहीं कि बिना स्ट्रेस के रहना सीखो, स्ट्रेस लो ही मत। तो ये हमारी हालत है। तो हम अगर ये सीख पाए कि हमको ट्रेन में चढ़ना ही नहीं है, आपको लोग सिखाएंगे देखो ट्रेन में यहाँ से चढ़ो और यहाँ उतर जाओ, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमें ट्रेन में चढ़ना ही नहीं है। ट्रेन आएगी और ट्रेन जाएगी, रिश्ते आएंगे रिश्ते जाएंगे, काम करना है, जॉब करनी है, सारी चीजें लाइफ के अंदर करनी है, उनसे अटैच नहीं होना है। सिर्फ वर्ड आता है साक्षी। जैसे यहाँ पे ये साक्षी है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन जानी है, आपके पास रेड सिग्नल है, इससे अटैच नहीं होना। गुरु जो होते हैं वो सिर्फ यही बताते हैं। तो ये हमने आज की एनालॉजी देखी, और हम यहीं पे फिनिश करेंगे कि हमने देखा सबसे पहले कि क्यों हमें इल्यूजन होता है अपने इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से। स्नेक और रोप का एग्जाम्पल देखा, डेजर्ट के अंदर जो पानी दिखता है मिराज, उसकी बात करी, वाटर के अंदर टेम्परेरी जो वेव्स आते हैं, हमारे दिल में जो विचार उठते हैं उनकी बात करी, पॉट और क्ले की बात करी हमने कि किस तरीके से वो हमेशा क्ले होती है, लेकिन पॉट के अलग अलग शेप्स फॉर्म्स बनते हैं। गोल्ड ऑर्नामेंट्स की बात हमने देखी कि वो हमेशा गोल्ड है। स्क्रीन और मूवी की बात करी, तो स्क्रीन, गोल्ड, क्ले, वाटर, डेजर्ट, स्नेक, रोप, ये सब सत्य हैं। उसके ऊपर अपीयरेंसेस क्या क्या है, जो मटेरियल वर्ल्ड है वो क्या क्या है। स्नेक जो कभी था ही नहीं, वाटर जो कभी था ही नहीं, वेव जो सिर्फ टेम्परेरी शेप बनी है, पॉट, क्ले ने कुछ पॉट की शेप ली है टेम्परेरी, कभी ना कभी वो टूटेगा, गोल्ड ने ऑर्नामेंट की शेप ली है, स्क्रीन के ऊपर मूवी चल रही है, अपीयर हो रही है, हमको उससे अटैच नहीं होना है। 3 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा मूवी देखें, लेकिन हम अगर हंसे और रोए भी तो भी ये ध्यान रखें कि ये मूवी है और सूनर और लेटर खत्म ही होगी, चाहे जितनी मर्जी डरावनी मूवी हो या जितनी मर्जी प्यारी मूवी हो, सूनर और लेटर खत्म। Hare Krishna. Thank you so much. We just need to think of all these examples. If we keep these examples in our mind, that never board the train, remember they all are the appearances, we can understand Achintya Bheda Abheda much more deeper. So I will finish it here. Hare Krishna. Thank you so much for everyone. So I'm happy to take any feedback, because as I said, I did it very different to what we usually do. Hare Krishna, Prabhuji. Valuable lesson. Hare. Thank you. Thank you. Excellent, Thank you. Prabhuji. Very nice. Understand. Very nice. Thank you so much. Thank you so much, Prabhuji, and thank you so much, Mataji. So sorry I had to rush a bit,
Yeah. because I wanted to finish on time, even though I've taken 5 extra minutes. But I think it's always good to have this perspective in between, that how to see the Lord and how to see something which never changes. And this is what our sadhu sant always tell us, that reality is always there. घर घर में, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ऐसा कहता है, सब माया है. What is Maya? Illusion. सब माया है, सब illusion है. It's always been rope. We don't need to fear at all. So with that, Srila Prabhupada ki jai, Gurudev Maharaj ki jai, jai jai Shri Radhe Shyam. Hare Krishna. Thank you so much. And I will miss your association for next 4 weeks, but due to my travel, I will be away. And I will come back, and we will have session on next Friday, 22nd of November, and then next Saturday, 23rd of November. And Mataji, happy travels. Pray for your very nice yatra, and we will look forward to see you first week of December when you will come back. Yes. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Then pranam to everyone. Hari Bol. Hare Krishna. Thank you so much.